Okay, students, how are you? I know it. You are very well, and just we are going to learn today the most important topic, 9th and 10th standard or CBSE class. It is most important topic to everyone. So this is the class for you only, and today we are going to learn some terms related to what spherical mirror. See here, center of curvature we had learned. Center of curvature. Okay, you can see the last video on the YouTube search. You can search there. Okay, so first rule is there. Some rules related to the light reflection. Number one rule, you know this is a suppose one type of spherical mirror, and this is a coated part of the spherical mirror. Okay, this is a coated part of the spherical mirror, and then this is a principal axis, and this is called P. P means pole. P means what? Pole. And this is center of curvature. You know that the center of curvature means what? So you can pause video, you can listen it, repeat it again and again, and you can learn this by heart. See here, center of curvature means what? The sphere of the center of the sphere, which is the part of mirror. See here, center of curvature means what? Center of the sphere, which is the part of the mirror, is called center of curvature. Then again, that is here we can see that this is the focal or focus point. We can call this is a focal or focus point. And then what is called focus or focal point? And then focal or focus point means which is the half of the radius of curvature. This is the radius P, and C is the radius of this curvature. Then focal point is the half of the focus point means what? Where the point is given on the principal axis. Point is given on the principal axis, which is parallel to incident rays. Principal axis is parallel to incident rays, and focus point means what? The point given to the principal on the principal axis, which the incident rays pass through that. Reflected incident rays when reflect pass through that focus, that is called the focal point or focus. Again, we can just consider there the focal length. This is the focal length. P and F is the focal length. See here, how we can say the focal length here? The half of the radius of curvature is called the focal length, or this is length given here. See here, this is the length which just I have written here, this arrow, small arrow. You can search it. हाँ, ये आप सभी को समझ में आया होगा कि मैंने जो बताया इंग्लिश में बात की, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए। मैं बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि कर्व होता है, जो कि स्फीयर रहता है, स्फीयर यानी गोल पूरा, उसका आधा जो रहता है उसको अपन कर्वेचर बोलते हैं, कर्व रहता है वो इसीलिए। और ये फोकल पॉइंट हमने बताया, ये फोकल पॉइंट क्या है कि जिसमें से ये जो इंसिडेंट रेस होते हैं वो पास हो जाते हैं उस पॉइंट से, जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं उसे कहते हैं हम फोकल पॉइंट और फोकस। See here, then second it is that is now just through this term we have to write the detail rule given. So how we can write the rule number one? See here, incident rays parallel to principal axis when they reflect pass through focus. See here, you can also remind it again and again. You can learn it. You can watch this video again and again. First number rule is there given. See here, when the incident rays are parallel to principal axis after reflection, goes through what? Tell me. You can also remind it. Goes through focus or focal point. Focal point is called focal point. This is the first law related to reflection of light. First rule, laws of reflection of light, and that is the number one rule which we get it here. Okay, see here, incident rays are parallel to principal axis. After reflection goes through
after reflection goes through this focal point is called this is the first law or first rule of the law of reflection of light. Then another rule number second. See here, how we can just consider the second rule. The same is like this. See here, when again we have to draw the one figure here, again we have to quote this, again we have to write here P, it means principal axis, then we can write here P, then this is a center, then this is a focus. Okay, this is principal axis, we can write here M point. Okay, then again suppose here incident rays are parallel to the principal axis. See here, when the sometime what happen, incident rays goes through focus. Incident, we can say here incident rays. Okay, so many rays goes through focus, again get parallel to प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, देखिए ये रूल बहुत आसान है, पहला वाला भी आसान था, ये भी आसान है. कैसे? जब ये इंसिडेंट रेज किस में से जाते हैं? फोकस से, तो बाद में फिर से क्या होते हैं? पैरेलल हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जब वो इंसिडेंट रेज डायरेक्ट आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हैं, वो किस में से जाते हैं? फोकल लेंथ से. लेकिन फोकल पॉइंट से अगर कोई इंसिडेंट रेज आया तो बाद में क्या होगा? फिर से पैरेलल हो जाएगा. ठीक है कि नहीं? तो कैसे बनाएंगे डेफिनेशन? व्हेन द रूल नंबर 2 वी कैन राइट हियर रूल नंबर सेकंड. व्हेन द इंसिडेंट रेज goes through किस में से जा रहे हैं? फोकल पॉइंट और फोकस. फोकल पॉइंट और फोकस goes through फोकल पॉइंट और फोकस after reflection become parallel to principal axis. It is very simple. See here. Okay, rule number 3 we can just draw here also. This is second rule, and then third rule we have to draw here. First of all, just simple diagram we have to write here. Rule number 3. Again same diagram we have to draw, same diagram. Okay, again we have to just quoted this part. Okay, here how we can say this definition here. I know these 3 rules are very easy. If you don't get it, you can ask me in comment. Okay, I will explain it once. If you want to learn daily from me, then you have to subscribe the channel given. Okay, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मराठी होंगे कोई भाई तो उनको भी बताइए. ठीक है कि नहीं? मराठी में मैं बात करूंगा आपसे. ठीक है, चलो ये आखिरी का रूल हम बताते हैं. आखिरी का रूल रहा है, ये किसके बारे में है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड दिस इज द थर्ड रूल. सी हियर, दिस इज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस. देन दिस इज व्हाट? very good, center of curvature. And this is what? Focus point. Okay, this is very simple. Now what we have to do? इंसिडेंट रेज पहले पैरेलल हुए, सेकंड में फोकल लेंथ से गए, अभी कहां से जाने बाकी है? तो इंसिडेंट रेज हम अभी यहां से क्या करेंगे? पूरे इंसिडेंट रेज यहां से गए. ठीक है कि नहीं? ऐसे गए. तो यहाँ पे आने के बाद, मिरर पे आने के बाद होता यह है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल थे तो फोकल पॉइंट से गए, और यहाँ पे जो मैंने बताया इंसिडेंट रेज जब फोकस से जाते हैं तो बाद में पैरेलल होते हैं. और तीसरी बात है, जबकि इंसिडेंट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हैं तो उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं. तीसरा नियम क्या है? उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं. तो तीनों रूल याद रखेंगे आप.
स्पेयर के बारे में, जितने भी स्पेरिकल मिरर होते हैं उनमें ये रूल पूरा लागू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये रूल लिखते हैं अपन, तुम भी लिखो मेरे साथ, सभी जन नोट करो इसको। तो देखिए रूल क्या है, when the बताइए क्या होगा, इंसिडेंट रेज go through center of curvature after reflection passes with same path back, कितने सिंपल है। देखिए ना, पहला नियम क्या बताया, जब इंसिडेंट रेज पैरेलल है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां से जाते हैं, फोकल लेंथ से। दूसरा नियम मैंने बताया, जबकि इंसिडेंट रेज फोकल से गए तो बाद में क्या हुए, पैरेलल हुए। और तीसरा नियम यह बताया, जबकि इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज है, ओके इंसिडेंट रेज है, जबकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो फिर से वापस उसी रास्ते से चले जाते। तो अगर यहां से रेज गए तो वहां पे कोई एक्चुअल मीट होता है क्या, नहीं होता, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल हुआ, बाद में पहले पैरेलल था इंसिडेंट रेज, यहां से गया तो फिर से पैरेलल हुआ, ठीक है कि नहीं। ये तीनों नियमों के अनुसार हम सीखने वाले हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ spherical mirror, and that spherical mirror you have to watch this video in next class and next period. Okay, so be continue here, note down this part. Okay, once I want to just say to you that please don't forget to subscribe the channel. If you want to learn more and more, you have to subscribe the channel and just share it to your friends. Okay, तुम्ही तुमच्या मित्रांना पाठवा, शेअर करा। नक्कीच आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये लेन्सेस आणि स्पेरिकल मिरर के जो पार्ट है ते अपन सीखना रहो, हम पूरा सीखेंगे, ठीक है। ओके, अगर किसी को हिंदी में ऐतराज है तो मराठी में बताऊंगा, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से।